Hello, kids. A very good morning to all of you. Kids, today we are going to read another new chapter of science, and our today's topic is adaptation in plants and animals. So, here we go. So, kids, as you know, that the reasons around the world vary widely from one another. Some are cold, some are hot and dry, while some are humid. Understand? Yet, the reasons are home to various kinds of living organisms. In cold regions live polar bears, in hot deserts camel, and in seas कौन रहता है seas में? Fishes, yes, and other aquatic animals, right? So, kids, we can say that we find a variety of animals and plants in different regions of Earth. Yes, kids. So, plants and animals living in sea, जो plant और animal sea के अंदर रहते हैं, समंदर के अंदर रहते हैं, they are surrounded by saline और salty water. वो जो उस खारे पानी में रहते हैं वो salty water में रहते हैं. Most of them use the oxygen dissolved in water. ठीक है? Okay, in deserts there is a scarcity of water, right? Deserts में बहुत ज़्यादा पानी की कमी है. Deserts are very hot during the day and very cold during the night. Understand? रात को यहाँ बहुत ठंड होती है और दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है. द कैमल इज द मोस्ट कॉमन एनिमल ऑफ डिजर्ट. इट्स बॉडी स्ट्रक्चर हेल्प इट टू सर्वाइव द हार्श डिजर्ट कंडीशंस. द कैमल हैज लॉन्ग लेग्स that help to keep its body away from the hot sand. Its eyes have bushy lashes and its dung is dry. So, इस तरीके से अपने आप को सरवाइव कराता है डिजर्ट जैसे एरिया में. अंडरस्टैंड? उसी तरीके से सम फिशेस, फिशेस आर मेनी डिफरेंट काइंड्स, राइट? हम सभी ने अलग अलग टाइप की फिशेस देखी हैं. हाउएवर दे हैव समथिंग कॉमन, राइट? इन सभी फिशेस में कुछ चीज कॉमन है, दैट इज देयर बॉडी शेप. All fishes have a steamed line shape. एक बोट की तरह शेप होता है इनका. Okay, that helps them to swim faster and quicker in water. ये उसकी वजह से, अपनी इस बॉडी की वजह से फास्टर और क्विकर पानी में स्विम कर सकते हैं. Fish have slippery scales on their body. इनकी बॉडी के ऊपर काफी स्लिपरी स्केल्स होती हैं. The scales offer protection and enable easy movement through water. ये help करती हैं ये पानी में easily अपना protection कर सके और movement कर सके. Fishes also have flat fins and tail that help them to change direction and maintain balance in water respectively. और इनके पास जो gills हैं, the gills present in fishes help them to use oxygen dissolve in water. ये मदद करते हैं ये गिल्स उनको पानी में से ऑक्सीजन को लेने में. अंडरस्टैंड? सो द फीचर्स ऑफ फिश हेल्प इट टू लिव इन वाटर. In the same way, likewise, the features of camel help it to survive in a desert. Understand? So kids, fish के features help करते हैं उनको water में survive करने के लिए, वैसे camel की features help करते हैं उन्हें desert में survive करने के लिए. Understand? So the natural surroundings or the environment in which an animal or a plant lives is called its habitat. जो प्राकृतिक नेचुरल वातावरण जिसमें कोई भी जानवर या पौधा रहता है वो उसका निवास स्थान कहलाता है. वो क्या कहलाता है? उसका हैबिटेट कहलाता है. अब हैबिटेट की क्यों जरूरत है? अ हैबिटेट प्रोवाइड्स एन organism with food, water, shelter that it needs for survival. किसी भी जीव को खाना चाहिए, पानी चाहिए, शेल्टर चाहिए, यही सारी चीजें तो उसको जीने के लिए चाहिए. तो एक हैबिटेट ये प्रोवाइड करता है किसी भी जानवर को. सो द एबिलिटी ऑफ स्पीशीज टू एडजस्ट टू इट्स एनवायरमेंट इज नोन एज एडेप्टेशन. Animals and plants have special features that help them to adjust to a particular habitat. ये जो special features जो इन्होंने developed करे हैं ये इनको एक particular habitat में रहने और वहाँ survive करने के काम आते हैं. Understand? The organisms
that live on land are said to live in a terrestrial habitat. जो भी जानवर जमीन में रहते हैं, animal that live on land are known as terrestrial animals. अब ये animals अलग अलग terrestrial areas में रहते हैं, like forest, grasslands, deserts, coastal and mountain regions are some examples of terrestrial habitat. ये सब terrestrial habitat के अंदर आते हैं जो कि land है. The organisms that live in water are said to live in an aquatic habitat. जो पानी के अंदर रहते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? वो aquatic habitat में रहते हैं. Ponds, rivers, lakes, seas and ocean are some examples of aquatic habitats. ये सभी aquatic habitats के examples हैं. So let's recapitulate about adaptation one more time. So the ability of a species to adjust to its environment is known as adaptation. Understand? या हम ये कह सकते हैं adaptations are characteristics that help an organism to survive and grow in an environment. Different types of terrestrial animals are found in different habitats. For example, camel in Thar Desert, Royal Bengal tiger in Sundarbans, and polar bear in the Arctic region. Yes, kids. In the polar region, animals have to face extreme winter, right? So उनके लिए काफी टफ होता है वहां रहना because it's too cold over there, right? इसीलिए कई बार एनिमल्स क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर चले जाते हैं जब तक वहां का प्लेस नॉर्मल ना हो जाए. दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन. अंडरस्टैंड? अब हम सीखते हैं कि हाउ दीज एनिमल survive there in this cold region. क्योंकि इनके पास क्या है? They have thick fur on their body and a thick layer of fat below their skin to keep them warm. ये इनकी जो thick fur है और जो इनका thick layer of fat है below their skin, वो इन्हें गर्म करके रखता है. इसीलिए ये इतनी आसानी से polar region में survive कर लेते हैं. Understand kids? और जो इनका कलर है, बॉडी का कलर, ये प्रोटेक्ट करता है इनको इनके प्रेडेटर से. इट ऑल्सो हेल्प देम टू कैच देयर प्री. एनिमल्स लाइक सिल्वर फॉक्स, सील, स्नो आउल, penguin, musk, ox, they all are animals from polar regions. Kids, now let's talk about animals in deserts. Yes, kids. So deserts are large sandy areas with scarcity of water and rainfall. यहाँ पानी और बारिश की बहुत कमी होती है. The deserts are extremely hot during the day but become cold at night. रात होते ही ठंडा होने लगता है और दोपहर में तो बहुत extreme hot होता है. Right? So यहाँ animals क्या करते हैं? Night के टाइम अपना शिकार करते हैं. At the night they used to come out only at the night time to look for food. Can you tell me which animal is this? Yes, it's sheep of desert. It's camel. Let's learn how it developed itself to survive in desert. A camel can survive for a long period of time without water and food. It stores fat in its hump and use it during the period of scarcity of water. Yes, kids. पानी और खाने की जब कमी होती है ये अपनी बॉडी में उसको स्टोर करके रखता है और जब ये स्टोर करके रखता है जब स्कैसिटी होती है तो उस फूड और उस वाटर का यूज करता है. इट हैज फैट एंड वाइट पैडेड फीट which help it to walk on the sand without sinking. Understand? It has hump. आप देखेंगे इसका एक बड़ा सा hump है. यहीं पर ये अपना फूड और वाटर स्टोर करके रखता है. The long eyelashes, special eyelid and large nostril protect it from the blowing desert sand. आप देखेंगे इसके लंबे लंबे से legs हैं और ये जैकल रैबिट के भी लंबे लंबे से कान हैं. Why? क्या आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों है? Yes, kids, I am going to tell you. The long legs of camels help them to remain away from the hot sand. Yes, kids. Jackrabbits have long ears which radiate heat from the blood out through their ears. Yes, kids. इसीलिए इनके लंबे कान होते हैं. So kids, some animals in deserts, they have, very hard skin like lizard, snake. Actually, they have thick scales in their body. ये scales क्या काम करते हैं? These scales prevent excessive loss of water from their body.
Animals in forests. So, kids, forests are home to a huge variety of animals, right? Some insects mimic their surroundings. That is, their bodies resemble the shape of a leaf or a twig that they sit on. Yes, kids, आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों मैम कह रही हैं? Yes. Do you know which animal is this? Yes, it's a chameleon, right? So, some animals can change the color of their skin to match the background when faced with a threat. This is known as camouflage. इसे हम कहते हैं camouflage. The method of hiding in surroundings by changing one's physical appearance is called कैमोफ्लाजिंग. इसे हम कैमोफ्लाजिंग कहते हैं. इसी तरीके से कई एनिमल्स हैं जंगल में लाइक जेब्रा, टाइगर, लेपर्ड. ये भी अपनी बॉडी को क्या करते हैं, इनकी बॉडी में स्ट्राइप्स होते हैं तो ये अपने आप को क्या करते हैं, कैमोफ्लाज कर लेते हैं. अंडरस्टैंड? इससे अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर लेते हैं, कैमोफ्लाजिंग कर लेते हैं. इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स है लाइक स्टिक इंसेक्ट्स, लीफ इंसेक्ट्स, एंड दिस हेल्प देम टू डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज. Now, let's talk about porcupine. A porcupine has spines all over its body. These spines are called quills. इन्हें हम क्या कहते हैं? Quills कहते हैं. When a predator approaches to it, the porcupine rolls up into a ball with all its quills pointing towards to scare away the predators. इसीलिए ये अपने quills को दिखाते हुए अपने दुश्मनों को भगा देता है. Understand, kids? Now, let's talk about animals in grasslands. Yes, kids, grasslands are flat areas of dry and windy land covered with grass. In some grassland, a few trees are also found. Grasslands lack large trees and heavy bushes. Understand? So there are often fire outbreaks in the grassland. So most of the animals, living here are adapted to live in burrows to protect themselves from fire. आग से अपने आप को बचाने के लिए. So here we can see different kind of animals like deer, zebra, bison, giraffe, hippos, rhinos, rabbits, and grasshoppers too. Yes, kids. Let's read how a grasshopper survives in grasslands. जो grasshoppers होते हैं, the grasshopper's shape and color matches with that of the grass. Therefore, it is able to hide itself well in the grassland areas. Yes, kids. The long hind leg are used for hopping. जिसके लंबे लंबे पाँव होते हैं ये हॉपिंग करने के काम आते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कूदने के काम आते हैं. The short front legs are used to hold food. आगे के जो उसके short legs हैं ये food को hold करने में काम आते हैं. While flying, their colorful wings can be seen. उड़ते समय इनके colorful wings को हम देख सकते हैं. These bright red and blue wings confuse their enemies. इनके bright red और blue wings confuse कर देते हैं इनके enemies को. Understand, kids? So, kids, some animals go for a sleep in their caves or holes. Yes, to escape from the extreme weather conditions. Yes, kids, this long period of sleep is known as hibernation. इसे हम hibernation कहते हैं. Before going into hibernation, such animals eat a lot of food and store fat in their bodies. Yes, during hibernation, they use the stored fat in their body to survive. For example, snakes, lizards hibernate during cold winters. Yes, kids. Now, let's talk about animals in water. Animals that live in water are called aquatic animals. जो जानवर पानी के अंदर रहते हैं उन्हें aquatic animals कहते हैं. There are varieties of animals that live in water such as fish, seal, turtle, etc. Let us read how they developed or adapt themselves to live in water. Fishes can easily breathe in water. They take in dissolved oxygen from water through their special organs called gills. Fishes have fins and streamlined body which help them to swim in water easily, right, kids? The tail of a fish helps it to change direction in water. Yes. Now let's talk about amphibians. Amphibians
are animals which can live both on land and in water. They are known as amphibians. There are few examples of amphibians like a frog, toad, and salamander. Yes, kids, they have some special body features which help them to survive both on land and in water. So, this is all for today. Thank you very much for watching this video. Hope you all understood. Thank you very much. Next time we will learn about adaptation in plants. So, thank you.